So Biru, engineering leader at Better Half, pretty large team you have, right? Yeah, around 25 people. Pretty large, pretty large. What's your journey has been before Better Half? आपका क्या stint था, कैसे journey रही हुई है? So basically I graduated from IIIT in Hyderabad in 2011. अच्छा. And after that I worked in a couple of companies. Right. And Startups mostly or what? Initially it was MNC, the first company MNC, but I realized after that कि it's not my cup of tea, this is not something I want to do. क्यों? क्योंकि I think since childhood itself, right, I always want to challenge myself. Okay. अच्छा. Challenge and learn something new. रेबल थे क्या चाइल्डहुड से? रेबल उस तरह से नहीं, बट हाँ अपने आप को चैलेंज करना पॉजिटिव वे में देखे तो भी है, मतलब खुद को चैलेंज करते थे, किसी और से कम्पीट नहीं। तो मतलब कि यार मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कि दे आर वर्किंग इन स्टार्टअप वर्ल्ड, और मैंने रियलाइज़ कि एमएनसी में कंफर्टेबल लाइफ तो काफ़ी है, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। राइट। काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, राइट, मतलब उस तरह से अपने आप को हमेशा चीज़ों को मैंने लाइफ में कुछ अचीव करने का जो सक्सेस है और जो एक अचीवमेंट का एक रिजल्ट है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा था। तो मुझे हमें लगता था यहाँ पर लाइफ तो सही है, स्टेबल है, बट दिस इज़ नॉट फॉर मी। करेक्ट। देन आई रियलाइज कि नहीं, आई नीड टू switch, or like I need to work in some startup, and then I joined InMobi. At that time ये कौन से टाइम की बात है? 2014 है, 2014. So 3 InMobi years. चालू कब हुआ InMobi? InMobi started I think 2008 or something. Okay. So initially they started with mCoach. That's a different thing, same kind of thing. Right. But mCoach generally SMS करते थे उस समय. अच्छा. Message खोज करके. Right. And then they moved to InMobi. It's a kind of inside mobile or something. So I joined at time when it was growing very rapidly. बहुत मतलब बाहर से दिखता था कि कंपनी में टेनिस है, ये कोर्ट है, वो कोर्ट है। हाँ, काफी सारा नहीं, InMobi में स्टार्टअप था तो उस तरह का फैसिलिटी नहीं था, एमिनिटीज नहीं था। अच्छा, मैं बहुत बात की बात कर रहा हूँ। राइट, तो एमिनिटीज उस तरह की नहीं थे। ऑफिस बहुत अच्छा था, क्यूबिकल नहीं था, काफ़ी ट्रांसपेरेंट ऑफिस हुआ करती थी। वहाँ बहुत मज़ा आया काम करके। सीरियसली आई लर्न, आई मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ओवर देयर। इट वाज क्वाइट बिकॉज आई वर्कड ऑन द बिग डेटा काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, हडूप, विच वाज अगेन उस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था। तो अभी है क्या बाय चांस? अभी भी है बिग डेटा, आजकल तो हर कंपनियां बिग डेटा पे काम कर रही है। बट अभी फिनटेक का अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग है, उसमें बिग डेटा का ट्रेंड था। तो बट देन आई रियलाइज यार इन स्टार्टअप में काम तो किया, बट इट्स नाउ आई नीड टू डू अ स्टार्टअप माई ओन, मतलब कि एक रैपिड ग्रो स्टार्टअप में काम करना और एक फील करना जहाँ पर आप स्क्रैच से काम करते हो। तो देन आई थॉट कि आई शुड ज्वाइन दैट। सो आफ्टर 2 years वर्किंग इन InMobi, मेरा एक्चुअली माई फ्रेंड सीनियर दे आर स्टार्टिंग द कंपनी, सो आई ज्वाइंड एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कंपनी। वहाँ पर दैट अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज यू नो एंड वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बिकॉज InMobi it was quite a good learning, good pay, everything is there, and from there switching a company where there is no user, no team member, it was 2 founder and I was the third, so I was a founding member. Pay cut लेके भी आए होगे, pay cut लेकर आया था, but I want to do that, as I mentioned, right, I want to challenge myself always and always want to see how the industry grows, right, from scratch. InMobi was at that time, it was around $1 billion unicorn company when I joined. Then everything I set up from scratch, because my 2 founder, the company founder, they were in US at that time. They were pitching in the YC at that time. Okay. So I was there. I set up the offices, everything, premises. तो वो भी एक जर्नी है, स्क्रैच से काम करना, कंपनी को वहाँ से ग्रो होते हुए देखना, एंड वी बिल्ड अराउंड 20 people, टेक टीम अराउंड 50 people of the team, the entire company. Okay. And was it the first time you're leading? You're acting as a leader of a large team? Right. It was the first time for me where responsibility was humongous, because before that it was an individual contributor. I was working as here I was working in the dual रोल, खुद भी कर रहे हो, खुद से मैं कर रहा हूँ, और नए लोग आ रहे हैं, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ, राइट, हाउ द थिंग वर्क्स. सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम दैट. सो द ट्रांजिशन फ्रॉम दैट रोल टू दिस रोल started actually in Hansel. And then the demonetization time आया at that time, when and Paytm happens to be our customer, right, and during that time when everyone start using the start paying online, because the cash, there was no hard cash people can use, right? Correct. And जो traffic था Paytm का, that immediately spiked, right, and our entire system crashed down. Right. Okay,
So and we were working the entire night fixing all those things. That was a very high pressure moment, and that is the reason I joined a startup. If you see, Right. because in movie everything was settled down. I was working in a startup, but जो challenging जो thing Right, था right. वो missing था कहीं. यहाँ पर system are crashing. Everyone is working like a hell over there. Okay, how can we fix it? Because we were a small company. Paytm trusted us, and they are using our product, right? And if we lose this big client, it is not a good thing for Correct, us, right? So we worked, we fixed in the night, and then from there company grows. We build the team. We reach to a scale जहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 500K was the average RPM. I Got it. think RPM क्या है? request per minute, Got it. which we were, and at the peak time it was 1 million requests per minute. So there I learned, the large scale system, how the large scale system works. So that was a journey. So I learned over there. Then during COVID or that time, I switched to a new role, and for a brief period I worked in Lido as there, Right. again as a senior leadership role, and I worked there. Then Rahul, who is my friend, and then he says that why don't you join Better Half, right, as a leadership role here. Since I know Better Half since the beginning of the company started. अच्छा, शुरुआत से you शुरुआत know. से मैं जानता हाँ, था Better हाँ, Half को. I right. think when they started the company, I had a discussion at that time itself with Rahul that how the company works, because at that time I was working in Hansel, so they came from Right. US, and राहुल आपके दोस्त थे. right, he is from my batchmate. आपने राहुल को एंजल राउंड नहीं दिया. They already had the money, right? Right, So that is the thing. So that is how my journey started in Better Half at that time. What made you say yes to Better Half at that particular moment and not before? Right. I think initially it was, there are lots of ideas over there, right? But you want to see how the traction works, Correct. how the thing. Correct. So initially I wanted to see how कुछ तो traction right, दिखे. कुछ तो है, right? Because Right. I was also working in a good startup, right? The company was growing. तो उस समय कंपनी काफ़ी सही चल रही थी और ये लोग बिल्कुल स्टार्ट किए थे, तो मैं देखना चाहता था ट्रैक्शन कैसा हो. Right. तो उस समय मैं आई वाज जस्ट मॉनिटरिंग, एंड वी यूज्ड टू हैव अ डिस्कशन विथ हिम. ऑल दोस डिस्कशन वाज हैपनिंग. तो उसके बाद धीरे धीरे देन दे गॉट YC फंडिंग, राइट? दे स्टार्टेड गेटिंग ट्रैक्शन, दे स्टार्टेड गेटिंग रेवेन्यू. ARR वाज रियली गुड, 1 million, 1.5 million. Right. दैट इज हाउ द ग्रोथ. आपका भी कन्विक्शन ग्रो कर रहा होगा. राइट, तो मेरा भी कन्विक्शन ग्रो कर रहा था. ट्रस्ट फैक्टर वाज ऑब्वियसली देयर वाज, राइट? कंफर्ट लेवल वाज देयर. तो आई डिसाइडेड कि नहीं, आई थिंक द कंपनी इज डूइंग गुड. वेडिंग इज अ फील्ड Right. विच इज वेरी जहाँ मच पे disruption नहीं हुआ है. अनएक्सप्लोर्ड, राइट? Correct. काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है. काफ़ी अभी कंपनियां उसमें इंटर नहीं की हैं, कि ये भी है तो बहुत छोटे लेवल पर है. तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. And I also wanted to be part of that journey, and that is the reason, I say yes, and Right. Right. then So yeah. मतलब I see that मतलब काफ़ी टाइम पे लीडरशिप पोजीशन में आप हो. आई एम जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू सेट अप अ टीम कल्चर, एंड डू यू लुक फॉर होमोजेनियस काइंड ऑफ पीपल टू गेट इन योर टीम, या यू आर लाइक कि नहीं. सो मैंने 2 टाइप के लीडर्स का फिलोसफी सुना है कि मुझे मेरे जैसे टाइप के लोग चाहिए, एंड द अदर इज कि नहीं, मुझे हेट्रोजीनियस मिक्स ऑफ पीपल चाहिए. हाउ डू यू डिसाइड कि टीम कैसे होनी चाहिए? व्हाट इज योर हायरिंग फिलोसफी लाइक? राइट, आई थिंक मुझे ऐसे लोग चाहिए अगर देखा जाए जो कि कंपनी के गोल और जो कंपनी के विजन से अलाइन हो. एंड डू यू डू दैट फॉर इंजीनियर्स ऑल्सो कि मतलब Right. लोग समझें? राइट, ऐसा सिर्फ नहीं. आई डोंट हायर पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव द टैलेंट. Okay. आई हायर ऑल्सो बिकॉज दे बिलीव इन कंपनीज विजन, एंड दे नो द स्टार्टअप कल्चर और नॉट. इट्स Okay. वेरी इंपॉर्टेंट. Is there a way to check it? Is there a way? I think obviously those who already worked in Acha, in okay. a startup, Got it. right? If you ask them that how is your entire day going to be, right? What all the things you are doing besides the work, Okay. that itself talks about lot of things. And will you give brownie points to someone who does a lot of thing outside work, like poetry करना, ये करना, वो करना? There has to be, I think, Acha. something which there some interesting thing. Got it. Because in a startup, the thing is nothing is a very much predefined. You have to explore and you have to find a way for yourself. Right. So as I mentioned, I like challenges. I believe the people should do something beyond what they were asked to do. Right. Right? Because in a startup, no one is going to tell that you have to do exactly this much. Correct. You have to put your mind also into that. Correct. Right? To make it a better version of that. And
so the better version is very important for everyone likes that, right? So I think I look into that. I think, and as you mentioned about homogeneous, heterogeneous, I always believe is heterogeneous is always a good better, thing. na? It's always better to have a different diversities there, because that gives a different kind of opinion, right? Otherwise it creates a तो very आपको जो लग narrow रहा है minded, सब हाँ हाँ मार कर रहे right? हैं. It becomes a very narrow minded, right? We want to have a wider mind people. You need to have a different, let's say different gender people, gender ratio should be there. Then there is a state wise and all the thing, different age diversity, right? Demography. So this thing also comes into Right. mind when, and we are in a better half. Right. It's a very much there is a male and female. There should be a ratio should be there, right? It's a good In the- diversity. right. So diversity in our team is really good. Right. So I always focus on that too. राइट मतलब आप ऐसे करते हो क्या मतलब यू एक्टिवली लुक फॉर कि ओके आई विल एम्पावर मोर वुमेन इन टेक let's I find think out it's not only me. I think it's about the ecosystem who is doing right now, and I'm Right. happy to see not only women, whoever. I think at the end of the day, it's a talent which prevails beside that. Correct. But it's important to see whether that person has the ability to learn or not. Right. If someone has that attitude where we can train or we can learn them, obviously we give that extra advantage to Right. that too. and any specific thing that you do कि मतलब जस्ट अ फन फैक्ट कि मार्केटिंग टीम में हम लोग एक अलग टाइप का कल्चर माहौल रखते हैं टू एंश्योर एंड आई हैव सीन कि इंजीनियर टीम का कल्चर इज स्लाइटली डिफरेंट वे में मेंटेन इन डिफरेंट कंपनीज. आप ऐसा कुछ डिफरेंट करते हो क्या अपार्ट फ्रॉम पार्टीज? पार्टीज तो करते ही हैं. बैंगलोर बहुत पार्टी करता है ना टेक, मतलब टेक वाले इतने पार्टी करते हैं राइट. बैंगलोर में. मतलब जिस तरह से मैंने अपने इंजीनियरिंग करियर में देखा है, हाँ. empowered हमें बहुत मिला है. Wherever I work, Right. the engineer team is I believe very well respected, and they are, if we empower them, if we give them freedom, the output you can see immediately or after some time, but you will see the output. Right. So I always believe that I always empower engineers. Right. Okay. I don't tell them exactly this is ये what करना you have है. to do. This is because again a startup में सब कुछ ऐसा नहीं होता है. एंड दैट इज ऑल्सो यूर लुकिंग इन द इंटरव्यू कि सामने वाला हाँ जी करके मैं जो बोलूंगा करेगा या एक्स्ट्रा जाएगा. Right. Let's say challenge them with certain question. How do they interpret that? Right. It's not just as I mentioned कि बस यही करना है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? क्या सोच इसके beyond what you can think. Got So I always believe in empowerment. I always believe from bottom to top approach. Okay, that you decide how much time it will take. Communicate that. Obviously there are certain time happens where it comes from top to bottom. Right. But mostly जहाँ भी अगर नहीं होता है तो we always say कि and for me each engineer has joined me with certain faith. My job is to make sure that वो जो faith के साथ वो हमारे साथ काम कर रहे हैं उस पर मैं खरा उतरूँ. क्योंकि end of the day for me as a leader, as a success is that whether I help them to grow as a career or not. फॉर मी इज़ अ कंपनी को भी, कंपनी का जो विज़न है उसके साथ उनको अलाइन करना, कंपनी के ग्रोथ के साथ कंपनी का जो टेक है उसको भी उसके साथ प्रिपेयर करना एट द एंड ऑफ द डे. एंड ऑल्सो जो इंजीनियर हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी उसके साथ ग्रो करवाना है. राइट. And if we do that, and if you see our retention is the highest in this, I think there is hardly 1 or 2 people, and they not quit, but they joined as a, let's say, or as a, I would say not company, but they are already working as a freelancer or as a startup. So that's what our motto is, that if you join, if you leave us, leave in such a way that you are working with some larger mindset, because I always believe that if you're working here, right, you should start a startup in future if you really, because that's why you are working here. Correct. Otherwise you can work again in MNC with a comfortable job and all those things. Yeah, point. Are you looking for anyone in your team? क्या ढूंढ रहे हो अभी hiring के लिए? अभी हम लोग ना senior React developer we are looking at, senior React native developer and React native developer, because we as a company we are investing a lot in tech. And there is a lot to learn, there is a lot to grow. As a leader here, we as I mentioned that we always empower them. So जो यहाँ पर transparency है सिंधु, if you see there is a humongous transparency we are doing here in a company. तो कि टेक वालों को भी पता चले बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है. आई थिंक इन माय एंटायर करियर दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, दैट फाउंडर्स को अलग रखते हैं, बिजनेस को अलग रखते हैं, बिजनेस को अलग रखते हैं. सब कुछ आपको ना एक बोला सब कुछ सही चल रहा है, बट इनसाइड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन व्हिच डजंट कम इनटू द पिक्चर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अदर कंपनीज. तो लर्निंग बहुत ज़्यादा है. एज बीइंग आई एम अ VP ऑफ इंजीनियरिंग हियर, बट आई एम हैंडलिंग द एंटायर टेक टीम. सो आई बिलीव
believe whoever joins will handle, like at the leaders that senior position, they will handle the front end part of it. Got it. So learning काफ़ी ज़्यादा है हमारे and we are looking for React Native especially, but we always welcome any person who is a very good, who align with the vision. We are always welcome because we already raised 8.5 million in a series A. Nice, congratulations to the team on that. Sorry? Congratulations to the team on that. Thank you. So we are right now, we all have, see, if you market, there are lots of companies are not doing very good. Startups are, crashing down and all Yeah, those things. yeah. But we are thriving. We are not, that itself talks a lot about us, right? No, true. For- touch wood on that. Right. So for big company it's easy, but for a startup it's very difficult because Right. No one wants to put the money, right? Everyone is afraid. At that moment, if we raise 8.5 million, it's not a small thing, right? Right. So learning is good, opportunity is good, everything is good. So whoever wants to join with us, whether it's a front end, back end, especially in front end, because we have open role for senior leadership, senior role as a front end developer. You are most welcome to join. नहीं सही है वीरू, मजा आया आपसे बात करके. Me too. बहुत ही Asindu. मजा आया. It's great to have me here.